Hi guys, welcome to long video number 10, quitting my job to be a writer. कैसे मैंने अपनी नौकरी फाइनली छोड़ी एक राइटर बनने के लिए। जो मेरा पिछला लॉन्ग वीडियो था, लॉन्ग वीडियो नंबर 9, थैंक यू फॉर ऑल द अमेजिंग कमेंट्स फर्स्टली। आई रेड ऑल ऑफ देम, थैंक यू सो मच। बट जो मेरा लास्ट वीडियो नंबर 9 था वो खत्म हुआ था विद मी पब्लिशिंग माई फर्स्ट बुक और 5.1 and writing one more book one night at the call center. But in all those I was still working at the bank. तो मतलब मेरी जो बैंक की नौकरी थी मैंने रखी हुई थी। मैंने पहली किताब लिखी, वो चली थोड़ी, और दूसरी किताब भी चली। लेकिन मैं बैंक में नौकरी कर रहा था। क्यों कर रहा था नौकरी? वेल, द जॉब पेड वेल यार, अच्छी नौकरी थी इन द सेंस कि पैसे बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत हाई प्रेशर नौकरी भी थी। कोई ऐसे मुफ्त में आपको इतने पैसे नहीं देता। जब कोई आपको इतने पैसे दे रहा है तो थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ा काम होगा। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही नौकरी थी। इट वाज डॉइचे बैंक। माय माय लास्ट जॉब वाज डॉइचे बैंक, और उसमें वो डिस्ट्रेस डेट ग्रुप में मेरी जॉब थी। तो डिस्ट्रेस डेट ग्रुप जो होता है उसमें जो कंपनियों की बैंक्रप्सी हो रही है या जो कंपनियां बंद हो रही हैं बेसिकली, जिनकी फट गई है, बेसिकली उन कंपनियों, फटी हुई कंपनियों का ग्रुप कह सकते हो, बट ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगता कहने में। तो डिस्ट्रेस डेट ग्रुप, तो जैसे कि वेंचर कैप कंपनीज, जब एक कंपनी का जन्म होता है तब वो आती हैं। तो दैट यू कैन से इज द you can say is the maternity ward of companies, venture cap, angel investing, even private equity. लेकिन जो डिस्ट्रेस डेट का ग्रुप है वो ग्रेवयार्ड है, वो शमशान घाट है कंपनियों का, और आईसीयू है कंपनियों का। सो या नॉट अ प्रिटी प्लेस, बट पैसे बनते हैं तो बैंक में आप वहाँ काम करते हो, एंड लाइक यू कैन मेक मनी आउट ऑफ, देयर इज अ बिजनेस ऑफ funerals as well, I guess. I don't know. Anyway, तो मैंने अब तक 2 किताबें लिख ली थी। एक थी 5.1 और एक थी वन नाइट एट अ कॉल सेंटर। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चीज थी कि मुझे राइटिंग पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं लिखता जाऊं और कई सालों तक, मतलब फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैं लिख सकूं। मतलब एक कहीं ना कहीं सपना पैदा हो गया था कि मैं एक करियर राइटर बन जाऊं। और एक चीज के बारे में मैं क्लियर था कि मुझे वन हिट वंडर नहीं बनना था। वो क्यों? क्योंकि जो मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, पर आप कोई भी और राइटर्स देखो, ज्यादातर उनकी एक बुक बहुत मेगा हिट होती है। एक बुक, और बहुत अच्छी बात है वो बुक मेगा हिट है। बहुत से राइटर्स की तो एक बुक भी मेगा हिट नहीं होती, बहुत से राइटर की तो बुक छपती नहीं है, और छपने के बाद चलना बहुत मुश्किल होता है, और चलने के बाद मेगा हिट होना और भी मुश्किल होता है। तो एक मेगा हिट होना भी जिंदगी में बहुत बड़ी बात है, और आप जिंदगी भर उसका नाम तो उसके नाम का तो खा ही सकते हो। मतलब इवन इफ नॉट मनी, वेर एवर यू गो, कोई कहीं भी जाओगे आपको बोलेंगे अरे इन्होंने वो बुक लिखी थी, राइट? बट अल्टीमेटली यू आर वन हिट वंडर। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आपने एक अच्छी बुक लिखी और वो चली भी, लेकिन आपकी अभी बाकी जिंदगी में आप क्या कर रहे हो? वापस नौकरी पे चले जाओ, कोई और चीज करो, क्योंकि आपकी एक ही बुक चली है। वो मुझे नहीं बनना था। ये मैंने कहा मैं अलग करूंगा। मैं 5.1 जब चली थी और वो इतनी अच्छी चल रही थी, और एक नॉट जस्ट बुक का चलना, वो एक कल्ट बुक बन गई थी, हर हॉस्टल में वो बुक पढ़ी जाती थी। आई कुड हैव बीन दैट गाय जिसने वो 5.1 वाली बुक लिखी थी। और आज भी वो बुक एक तरह से, ऑब्वियसली फॉर मी इट चेंज माय लाइफ, लेकिन अभी भी उस लोग उस बुक को बहुत मानते हैं, और स्पेशली जो मूवी बनी 3 इडियट्स, उसको आज तक लोग याद रखते हैं, मूवी को। सो विच इज ग्रेट। बट आप ये सोचो कि जिसने वो काम करा, अगर वही उसका काम चला है, तो उसके बाद वो क्या करेगा अपनी पूरी जिंदगी में? तो मेरे को पता था मैं अपनी जिंदगी में मैं और बुक्स लिखना चाहता हूँ, और उनको इंजॉय करना चाहता हूँ, लिखना, लॉन्च करना मैं चाहता हूँ, लोगों ने पढ़े। और उसके लिए मुझे एक बड़े अलग तरीके से अपना सोच रखनी होगी। और पहली सोच तो ये होगी कि एक सक्सेस पे रेस्ट नहीं करना। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड एडवाइस इवन फॉर लाइफ। कई बार हमारी लाइफ में हम एक चीज अचीव कर लेते हैं, लगता है हमने सब कुछ कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोग मेरी पहली किताब की वाहवाही कर रहे थे या मुझे तारीफों के मैसेज भेज रहे थे, तब मैं अपनी अगली किताब के बारे में सोच रहा था। नॉट इन अ इनसिक्योर सॉर्ट ऑफ वे, नॉट इन द फैक्ट कि आई डोंट सेलिब्रेट द मोमेंट और आई डोंट एंजॉय माई सक्सेस। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक आई एम नेवर हैप्पी, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि इसको पकड़ के नहीं रहना, क्योंकि ये चला जाएगा
और मेरी बाकी जिंदगी बच जाएगी. एंड आई लव राइटिंग एंड दैट इज व्हाट आई वांट कि मेरे को एक फुल टाइम राइटर बनना है. एंड लाइक आई सेड मोस्टली वन हिट वंडर होते हैं. मैंने अपने पब्लिशर से भी पूछा, उसने कहा बहुत कम है, बहुत ही कम है. ही टोल्ड मी वन एग्जांपल हुज देयर. ही सेड रस्किन बॉन्ड इज देयर. ही हैज रिटन 80 बुक्स and he still kind of is around and he's quite old. He's still around actually. And but एक रस्किन बॉन्ड, यू नो, एंड रस्किन बॉन्ड इज समबडी जो हम स्कूल में जब छोटे बच्चे थे तब से उनकी बुक्स पढ़ रहे थे. मैंने तो एक बुक लिखी थी. ही हैड रिटन सम 80 बुक्स. सो आई वाज लाइक ओके फाइन. बट ही सेड वैसे नहीं होता. आई सेड ओके फाइन, फिर भी मुझे करना है. तो जब मेरी पहली बुक आई तो आईआईटी पे थी. मैंने कहा किसी ऐसे टॉपिक पे लिखता हूँ जो अभी भी लोगों को जिसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो आईआईटी के बारे में नहीं होगी. मैं चाहता तो एक और आईआईटी की बुक लिख देता, 5.7 का सीक्वल लिख देता. वो कैरेक्टर्स लोगों को इतने पसंद आए थे, उसी में चलते रहता. बट यू नो समवेयर डाउन द लाइन आई फेल्ट कि ये करूंगा ना तो आई विल स्टॉल. आई विल अगेन बिकम दैट वन हिट वंडर गाय. दैट इज व्हाई इफ यू नोटिस आज तक मेरी जितनी भी बुक्स आई हैं मैंने किसी का भी सीक्वल नहीं लिखा. आई डोंट राइट सीक्वल्स बिकॉज आई डोंट वांट टू रेस्ट on the laurels of one book. I want the ability to create new characters with each and every book. Anyway, तो मेरी 2 बुक्स हिट हो गई. यू कैन से 5.7 ज़्यादा हिट हुई, वन नाइट सेंटर कॉल सेंटर भी हिट हुई. और फिर मेरे को एक थर्ड बुक का आइडिया आया और मैंने सोचा कि मैंने पहली बुक आईआईटी के स्टूडेंट्स के बारे में लिखी है जो एकदम ही एलीट कॉलेजेस में जाते हैं. और फिर मैंने कॉल सेंटर वालों के बारे में लिखी जो उससे कम मार्क्स वाले भी जाते हैं. और अब क्यों ना मैं एक ऐसे लोगों की बुक लिखूं जो बहुत ही ऑर्डिनरी है, सिर्फ 12th पास है, कॉलेज भी नहीं गए. और वहां से मुझे आइडिया आया क्यों ना वो 3 फ्रेंड्स एक बिजनेस खोले. और द बेस्ट प्लेस टू सेट द स्टोरी वाज अहमदाबाद, क्योंकि मेरे को ये भी लगा कि मैं 5.7 दिल्ली में सेट है, वन नाइट कॉल सेंटर दिल्ली में सेट है. तो मैंने कहा कि एक अलग सिटी में जाना ज़रूरी है, कि नहीं तो फिर वो सेमनेस आती जाएगी. तो फिर मैं अहमदाबाद में रहा था, आई एम अहमदाबाद में मैं रहा था. और क्योंकि मैं बुक लिखना चाहता था जो लोग कॉलेज भी नहीं गए और अपना बिजनेस खोलते हैं, मैंने कहा अहमदाबाद इज गुड प्लेस बिकॉज गुजराती पीपल आर नोन फॉर देयर बिजनेस स्किल्स. बड़ा अच्छा वहाँ बिजनेस होता है. तो मैं 1995 टू 97 तक आई एम अहमदाबाद में था. तो आई हैड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिटी, यू कैन से. एंड मेरे को बड़ी अच्छी भी लगती है वो जगह अभी भी. आई रियली लाइक अहमदाबाद एंड आई हैव सो मेनी गुड मेमोरीज फ्रॉम देयर. इवन नाउ व्हेन आई गो आई रियली एंजॉय. आई हैव यू नो people I know, they are very very good people are there. So मेरे को हमेशा उनसे मिलके अच्छा लगता है. तो then when I graduated in 97, उसके बाद लेकिन something very strange had happened in गुजरात and Ahmedabad. One is 2001 में एक बहुत बड़ा earthquake आया था. In Ahmedabad there was a very big earthquake and the city I loved and enjoyed really suffered. So that was very hard to read. I was working in the bank at that time and I was like यार ये क्या हो गया, right? And then 2002 में वहाँ riots हो गए. You know, there were riots, these Godhra riots were happening, and it was just again very, very bad, like, you know, the kind of news that was coming. And that I said, okay, this is really strange. This is not the city I knew. So that's where I got the idea of a book, which will be about 3 boys doing their business set in Ahmedabad, and that will have the earthquake and the riots in it. I also thought that at that time there was a historic test series इंडिया ऑस्ट्रेलिया की. बहुत सारे मैच सीरीज हुए हैं बट दैट वाज हिस्टोरिक. उसमें एक मैच था जो इसी टाइम पे हुआ था विच इंडिया वन दैट मैच, टेस्ट मैच, आफ्टर गेटिंग अ फॉलो ऑन. मतलब फॉलो ऑन मिल गया टीम को और फॉलो ऑन करके, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग की, फिर इंडिया ने पहली बैटिंग की, आउट हो गए फटाफट, फॉलो ऑन मिल गया. और उस फॉलो ऑन में इतने रन बना दिए कि डिक्लेयर किया और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग के लिए बुलाया और सबको ऑल आउट कर दिया. इट इज अ फिनोमिनल मैच. इवन दो आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज क्रिकेट फैन, बट फॉर एनीबडी इट इज अ ह्यूज मैच. 100 साल में 2 या 3 बार ऐसी चीज हुई है. एंड दैट ऑल्सो हैपेंड एट दैट टाइम. तो मैंने कहा ये सारी चीजें अगर हम एक स्टोरी में कन्विंसिंग वे में ले आऊं, then it can work. So it was my third book. So almost like as a and because when I was writing a book, some people used to say it's a mistake. Why are you becoming an author? Um, you know, why are you not focusing on your bank job? Why do you want to have this career like this? So I literally, out of sarcasm, named the book "The Three Mistakes of My Life."
it was my third book. Of course, in the story, the three mistakes are a bit different, but the title was meant to be a pun or like a sarcasm on what I was doing in life, the three mistakes of my life. And it was a story about these three boys who are Hindu boys who open a shop to sell sports goods, and they find a Muslim boy who is super talented, and then they teach him, coach him, and then there are riots. And what are they going to do? And does talent, if is he national talent or is he Hindu Muslim then, you know? So that to me became a fascinating story to write. It was a tough story to write, very tough, because like I said, ये सारे events उसमें डालने थे. I know a lot of people read my books और उन्हें लगता है अरे ये क्या है, ये तो बड़ी simple English है, तो कोई भी लिख लेगा, ये तो मैं लिख सकता हूँ. It's not that simple. I'm not bragging, but I'm just telling you, three mistakes of my life is I don't know how I wrote that book, because it's really woven so nicely. And if you've read that book, maybe you can comment below, or you've definitely seen the movie Kai Poche, that is with Sushant's first movie. Um, you have seen it has the match, it has the riots, and it has the earthquake. Everything is there, and business. If you haven't seen it, it's on Netflix, by the way. You can see Kai Poche, and yeah, of course, the book you can order too on Amazon or whatever. Anyway, so that was the book. I At that time, the stage of my life when I was in distressed debt in Hong Kong, when I was thinking of becoming a full-time writer, that's the story idea I had, the three mistakes of my life. And I felt कि because इन books की वजह से मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मैं अपनी बैंकिंग की लाइफ छोड़ दूं, मैं ये जॉब छोड़ दूं जो इतने पैसे देती है, therefore I will call this book the three mistakes of my life, because ये गलतियां मैं कर रहा हूँ. मुझे तब भी लग रहा था कि मैं शायद गलती तो नहीं कर रहा. So I was in a job, very stressful job. It was a fun job because this is distressed debt. So it's stressful, but it's also, I don't know, in a very dark sort of way, it's a lot of fun, right? Because you are in dealing with companies that are dead, literally dead. And the companies that cannot pay back their loans. Now, it's not always that companies cannot pay back their loans. It can also be companies do not want to pay back their loans. What they call as willful defaulter. बैंक से पैसे लिए, एक है कि यार बिजनेस खराब हो गया, मैं नहीं पैसे वापस दे सकता, दैट्स डिफरेंट, दैट्स द लैक ऑफ एबिलिटी टू पे. एंड दूसरा है मैं नहीं दे रहा वापस, कर ले जो करना है. और दुनिया में ऐसी कंपनीज भी हैं, या देयर इज डेफिनेटली दोस कंपनीज. और कंपनीज जिन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए झूठे बैलेंस शीट दिखाए, झूठे प्रॉफिट्स दिखाए कि भाई ये देखो हम तो इतना कमा रहे हैं, हमें पैसे बोरो करने हैं, पैसे ले लिए और फिर असलियत सामने आ गई और कहा अब तो हम नहीं दे सकते वापस. These are things that really happen in this world, and I had a chance to see all this, and it was quite fun if you look at it from a distance कि ये क्या करते हैं लोग दुनिया में. अल्टीमेटली इट्स अबाउट पीपल, एंड चाहे जितना भी फाइनेंस हो, कंपनीज हो, एंड अल्टीमेटली कोई ना कोई कंपनी होती है, उसका एक हेड होता है जो यू हैव टू डिसाइड, कैन ही पे और कैन ही नॉट पे, डज ही हैव द एबिलिटी टू पे or does he have the willingness to pay, or will he just can't pay, or does he want to not pay. तो ये सब आपको फिगर आउट करना होता है. और मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ. हमारा काम होता था जाके कंपनी को असेस करना कि कितना पैसा वापस आ जाएगा अगर इसने सपोज करो 100 करोड़ का लोन लिया या $100 million का लोन जो भी लिया है. हमारा था कि इसके पास जाएंगे और उससे चेक करेंगे, इसके एसेट्स देखेंगे, क्या क्या फैक्ट्री है, लैंड है, क्या बिजनेस बचा है इसका, उसकी क्या वैल्यू है, और ये बंदा कितना देने चाहता है. कुछ लोग हम मिलते थे, वो लोग डरे होते थे बैंक से, वो डरते थे, अरे सर आई नो मेरे को देने हैं पैसे, आई एम सो सॉरी सर, मैं देता हूँ. द पीपल हु एक्चुअली हैव दैट कॉन्शियंस, पीपल हु फील गिल्टी, अरे यार मैंने वो आपको पैसे नहीं दिए. मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक दैट, राइट? अगर आप पे उधार चढ़ा हो आपको बड़ा बुरा लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, अरे यार मैं उधार कैसे वापस दूं. दैट्स आवर कल्चर, एंड दैट्स आई थिंक इन अ गुड वे, इट्स अ गुड थिंग, राइट? तो अगर कोई मेरे को ऐसा बंदा मिलता था तो मैं कहता था कि, और उसका बिजनेस थोड़ा बहुत बचा होता था, आधे से ज्यादा मर गया, तो मैं कहता था ओके, यू नो he cannot give 100 million back, but maybe he'll give 60 million back or 70 back. So we would say, what is the price of this company's debt now? 60 to 70 cents. That's the terminology we use in distressed debt. 60-70 cents दे देगा सर वापस, कोई घबराओ मत, उतना आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है वो कोशिश कर रहा है. बट इफ यू मीट अ पर्सन हु सेज जा कर ले जो करना है, मैं नहीं दे रहा, then what do you do, right? Now you will, of course, हाथापाई थोड़ा करेंगे, हम बैंक में काम करते हैं, तो we would threaten, but not like threaten in a गुंडागर्दी way. We would say we'll do legal cases on you, we'll do, हाँ कर ले जो करना. जो जितना टफ बनता है, मैं वापस जाके, मैं और मेरे कोलीग्स भी वापस जाके रिपोर्ट देखेंगे, सर 20 ही आएगा वापस,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाइफ में जो शरीफ होता है उसको ज्यादा पैसे वापस देने पड़ते हैं, और जो गुंडा होता है उससे लोग डरते हैं, उससे नहीं लेते। ये हम बताते नहीं थे उन्हें जाके हम। पर फैक्ट इज कि जो हम लिखते थे कि मैनेजमेंट अनकोऑपरेटिव, 20 सेंट्स रिकवरी। और वो अगर आपने 20 पे वो डेट खरीद लिया कहीं से, आपको 25 भी मिल गए तो आप बड़े खुश हो जाते थे, हाँ इसने तो 25 दे दिए। और वो 60-70 वाले के पीछे आप पड़े रहते थे जब तक वो 70 नहीं देता था। भाई 70 तो तू देगा अब, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई लर्न अबाउट लाइफ की, जो कई बार लाइफ में जो टफ होता है वो कमा देता है। देयर इज अ मीटिंग, आई डिड नॉट गो फॉर दिस मीटिंग, बट माई कोलीग्स वेंट फॉर दिस मीटिंग इन थाईलैंड, एंड देयर वाज दिस कंपनी, एंड द गाय केम, द सीईओ केम टू मीट अस कि भाई हाँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा कि जाकर ले जो करना है, ही डिड नॉट से दैट, ओके। बट आई विल टेल यू व्हाट ही डिड। ही सैट फॉर द मीटिंग, आओ सर बैठो, चाय कॉफी चाय कॉफी, एंड आराम से बैठा और अपनी पॉकेट से पहले वॉलेट निकाल के टेबल पे रखा और दूसरी पॉकेट से एक गन निकाल के टेबल पे रख दी, और बोला हाँ बोलो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं बोला, उसने धमकी नहीं दी, उसने गन पॉइंट नहीं की, ऑब्वियसली कुछ नहीं किया, बस उसकी जेब में गन थी। और ऐसी फटी बैंकर्स की, ऐसी फटी, उन्होंने जाके कहा कि सर 10 पैसे भी नहीं वापस आएंगे 100 में से, मतलब। तो you can say it's quite a fun, not fun, but a strange kind of business. I remember in Japan, I heard, I didn't work in Japan, but my colleagues who worked in Japan, they said कि एक फैमिली को एक घर, मतलब बैंक को एक घर लेना था, गिरवी रखा हुआ था घर, और पैसे नहीं दे पा रहे, तो बैंक को घर वापस लेना था। लेकिन वो घर वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि अ, उस घर के अंदर उनके एंसेस्टर्स की डेथ हुई थी और उनकी अस्थियां पड़ी हुई थी, वो जैसे अस्थियां होती है ना, लाइक रिमेन्स ऑफ द डेड, तो वो आप ले नहीं सकते। तो बैंक ने एक बुद्धिस्ट पुजारी मॉन्क हायर किया। वो मॉन्क गया उस घर के अंदर, वो गया, उसने जाके फटाफट कोई मतलब पूजा वूजा करी कि वो आप अस्थियों को उस घर से बाहर निकाल सको। उन अस्थियों को बाहर निकाला गया और फिर उन्होंने उस घर पे कब्जा कर लिया। वेरी बैड, वेरी डार्क, बट दे hadn't paid the bank. So it was like one of those business where people literally, I told you, it's a graveyard, it's a ICU, it's like vultures, and all the people in this distress debt are crazy people, and they become a little crazy. We were vultures, we were cleaning up. इट इज नेसेसरी कि अगर कोई लोन खराब हो जाता है उसका रेजोल्यूशन हो। अगर वो 100 वापस नहीं आ रहे, ये नहीं कि जिंदगी भर अटका रहे, वो 25-30 पैसे में खत्म करो बात और आगे बढ़ जाओ। तो इन दैट वे इट्स गुड टू क्लीन द सिस्टम लाइक दैट। But I told you, like when things like this happen, when a family is evicted and all, it can get very ethically a very strange thing. Financially, we have the right to remove them, but ethically, should you remove them? So that was distressed debt. एंड इस डिस्ट्रेस डेट में भी मैं क्या कर रहा था, दो कंपनीज थी जिसकी वजह से मेरा एक करियर बन गया एक तरह से इन फाइनेंस। आई शुड टेल यू दिस बिकॉज यू विल प्रॉब्ली नो कि मैं वहां क्या कर रहा था। नॉर्मली मैं हमेशा बुक्स की बातें करता हूँ, बट आई शुड टेल यू टू कंपनीज which I got very lucky with in the distressed group, because of which the bank made a lot of money, and therefore I got my bonus and my money, which eventually like may have helped me quit. So I am thankful to these companies actually. One of the companies was LG Philips Display. I still remember the name LG Philips Display. What is LG Philips Display? जो आपके घर में टीवी होता है उसकी एक एलसीडी स्क्रीन होती है, आजकल सबके घर में एलसीडी टीवी होते हैं, या ओलेड भी होता है कई बार, बट एनीवे दैट फ्लैट स्क्रीन टीवीज आर देयर। इन टीवी से पहले यू मे रिमेंबर देयर वर दीज फैट टीवीज, वो मोटे मोटे सीआरटी टीवीज, कैथोड रे ट्यूब के टीवीज होते थे। दैट वाज अ टेक्नोलॉजी। दिस फ्लैट स्क्रीन वाज अ वेरी लाइक अ ब्रांड न्यू थिंग एट दैट टाइम। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड मोस्ट पीपल हैड द सीआरटी टीवीज, दो मोटे मोटे टीवी जो जिनके पीछे इतने होते हैं। सो दे यूज्ड टू हैव these सीआरटी screens, right? So this was the company that used to make them, LG Philips Display. LG also makes panels for flat screens now, but at that time this company was also huge, huge. I'm talking like they must be supplying 50% of the TV screens in the world. So it was so big, but flat screens were coming and the prices started falling down. तो जब वो फ्लैट स्क्रीन की कीमतें गिरने लगी तो ये सीआरटी जो था डामाडोल होने लग गया। नाउ सीआरटी ओवरनाइट नहीं गया गायब, राइट? पहले जैसे यूएस में फ्लैट स्क्रीन आई, वहां से सीआरटी हटा, यू नो। लेकिन पुअरर कंट्रीज में, अफ्रीका में, इवन इन इंडिया, लॉट ऑफ टाइम we had CRTs continued for 5-10 more years than in other markets like developed markets. So LG Philips Display had a business. ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं था, लेकिन वो छोटा हो रहा था, हर साल छोटा हो रहा था, और किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि सडनली बहुत ही छोटा हो जाएगा। लाइक हर साल 5-10% कम हो रहा था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो फ्लैट पैनल्स इतने सस्ते हो गए कि सीआरटी वालों का तो बिल्कुल ही बम्बू हो गया, मतलब 50%, 60% एक दिन में, और फिर फैक्ट्री लॉस, खत्म, गेम ओवर।
So this LG Philips display had a lot of debt, and that paper used to trade. And that paper, of course, when it was let's say 100% of the value will not come, then it started trading at 90 cents, 80 cents, 70 cents, karte karte. And I looked at the company. I also saw the adoption rates around the world, and मैंने देखा ये बड़ी जल्दी आएगा सर. Flat screens are coming, right? जब भी आप एयरपोर्ट पे जाओ, सारे लोग, मैं देखता था जब मैं इंडिया आता था, सारे लोग कस्टम्स के थ्रू अपनी एक छोटा टीवी, फ्लैट टीवी लेके जा रहे होते थे. मैं कहा भैया ये LG फिलिप्स डिस्प्ले के तो दिन गए, इन कुछ नहीं कर सकते अभी. तो मैंने कहा ये तो जा रहा है, जीरो पे जाएगा ये, मतलब वो कुछ नहीं दे पाएंगे वापस, बिकॉज दे रियली नेवर वुड बी एबल टू मेक एनी मनी. दे हैड सम फैक्ट्री लैंड, पर वो इतनी यूनियन है कोरिया में उनकी फैक्ट्रीज वगैरह की, वो यूनियन ही बोलेगी कि ये फैक्ट्री की लैंड का जो हमें पहले दो, इवन दो द बैंक्स आर ओड द मनी, वो नहीं होगा. So these are things you have to take. So point is, I said let's short this, let's like just sell this paper if we can. And there were still buyers in the market. I also found a buyer. There was one guy who wanted to buy this. मैंने obviously push नहीं किया, मैंने कहा सर आर यू श्योर. उसने कहा हाँ यार ये तो ठीक है, और कुछ है ही नहीं लेने को, मेरे को लेना है. और उसको बेसिकली हमने बेचा खूब सारा LG फिलिप्स, फॉरवर्ड बेच के शॉर्ट कर दिया. मतलब वी मस्ट हैव सोल्ड हिम एट 70 cents or so, and yes it did go to zero. And so the bank made a lot of money. I must have sold him 20 million worth of paper. So you know $14 million he must have paid for 70 cents, and then it went to zero. So we could pick it up at zero and give it to him. ले लो भैया, थोड़े दिनों में जीरो हो गया. And it was game over for that guy. That fund only closed down, but my desk made $14 million on that trade. So of course stud boy who did that trade will get some money. So I got money on that. And there was one more company called Moulin, the largest eyewear manufacturer in Asia. ये जो Ray-Bans और ये सब बनते हैं, ऐसे they used to make a lot of these sunglasses for, like, they were Chinese company जो बाकी brands के लिए बनाते थे. And they were doing huge business कि हम तो इतने 15 मिलियन चश्मे साल के बनाते हैं, they used to say. But धीरे धीरे पता लगा कि वो लोगों को चश्मा पहना रहे हैं, कुछ नहीं बनाते इतना. और उनकी नकली फैक्ट्री थी, और उनके ऑफिस नकली थे, और उनके ऑफिस जो था उसके बेसमेंट में एक असली ऑफिस था जहां पे झूठे कागज छपते थे, झूठे इनवॉइस छपते थे, झूठे सब था. which is something which is bizarre, like it is. एक होता है कि LG फिलिप्स डिस्प्ले बेचारा shit, उनका बिजनेस आउट हो गया, वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, पर ये लोग तो पूरा स्कैम चालू कर रहे थे. मतलब बेसिकली ये इन्होंने अपना बिजनेस जितना था उससे 10 गुना दिखा रखा था, और इन्होंने डेट उठाया हुआ था, अब वो डेट ट्रेड हो रहा था. तो उस पे भी आई रिमेम्बर, I won't go through the details, but that also I helped the bank trade, and I made a lot of money on that for my desk. So then I also got a good bonus those couple of years. So point is, ये सब मैं कर रहा हूँ, job interesting, making money, but I have these 2 books out, and I have to write 3 mistakes of my life. That story is sitting in my head. यार story आ गई, अब तो लिख. And then I'm not getting the time, and I'm thinking यार मेरे को फुल टाइम राइटर बनना है. ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रेस डेट वगैरह, बट आई कांट डू एवरीथिंग. यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू बी सो केयरफुल, टू रीड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट एंड फिगर आउट एवरी सिनेरियो कि हाँ तुम्हारे राइट्स होंगे कोरिया में, लेकिन जो वर्कर्स हैं वहाँ कोरिया के वो तुमसे ऊपर ही हैं भैया, चाहे लीगली जहाँ पे भी हो. सो यू हैव टू फिगर ऑल दैट आउट, एंड इट्स जस्ट स्ट्रेसफुल. सो आई वाज लाइक क्या करूँ क्या करूँ. सो anyway, meanwhile my boss, I remember, called me after these trades were done and I got a bonus that year. He said, Chetan, you're very smart, but you also understand people. You understand people. And because you understand people, that's a very, you know, rare combination, that you are smart at numbers and you're smart with people. You can go very, very far. Or if you remember my earlier long videos, I was this underconfident kid growing up. I was told by my boss at Goldman Sachs कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, right? And मेरे को कुछ नहीं आता है. And this boss was saying, boss, you are a deadly combination. Maybe I'd found the right desk, you know, because I used to really enjoy the distressed debt emotions, because I knew it was not so much finance. It was a lot of it was human psychology, right? So, but he said, this तू बहुत दूर तक जाएगा. तो you just remember that. So I said, sir, yes, I will go far. बट मुझे ये नहीं पता कि वेयर इज दैट फार, कौन से वाले फार में जाना है, राइट वाले फार में जाना है कि लेफ्ट वाले फार में जाना है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा. एंड ही लुक्ड एट मी लाइक पता नहीं क्या बोल रहा है, एंड देन ही सेड गो सेल सम मोर पेपर. फाइन, हो गया. तो
और उसके ये सब चल रहा है बीच में। मैं थोड़ी थोड़ी वीकेंड्स पे जब भी मेरे को टाइम मिलता था, थोड़ी थोड़ी मैंने थ्री मिस्टेक्स ऑफ द लाइफ बुक चालू करी। एंड आई सेड ओके, आई डू इट। I would Google and I'll see that I got articles written about my books. There were some people writing comments on my books. Some people would write blogs, they liked 5.1 one night call, they didn't like, whatever it is. And also one of my films started getting made, Hello, which is the book based on One Night at a Call Center. It started getting made, literally. And that film had like a special appearance with Salman Khan, who, like, for me, Salman Khan was like, bunk college and see Maine Pyar Kiya. And he was playing me because in the book, One Night at a Call Center, in the beginning intro of the book, there is an author and the author is Salman Khan. And I was like, wow, how can I miss this? तो मैं छुट्टी लेके, मेरे को याद है, इंडिया भी गया देखने के लिए शूटिंग, just like more like, and then to see him say the same lines जो child written, it was like, whoa, ये ऐसे भी होता है, like, and the first time you see movie stars, now of course luckily I know many of them and this that, but first time you see them, you're like, you don't even know whether they are real or like, you've always seen them on screen, and then they are reading the lines which you had written, which is like, wow. So I wanted to be there, man. I was like, ये सब हो रहा है बॉस, तू कर ये क्या डिस्ट्रेस LG Philips डिस्प्ले के चक्कर में पड़ा हुआ है, बट द मनी इज नॉट हेयर। आई एम गेटिंग टू सी फन थिंग्स बट द मनी इज नॉट हेयर। सो मेरे से हो भी नहीं रहा है। तो मैंने कहा यार कम से कम किसी तरीके से इंडिया तो आ जाऊं, बिकॉज ये हांगकांग से करना बड़ा मुश्किल है। और क्योंकि मैं डिस्ट्रेस डेट में हूँ और फटी हुई कंपनियां चाहिए, मैंने कहा सर इंडिया में मिल जाएंगी फटी हुई कंपनियां, की तो पूरी दुनिया में है, तो हमारा देश कौन सा पीछे है इसमें, हमारे देश में भी है फटी हुई कंपनियां। कहता सर आपके देश में फटी हुई कंपनियां तो हैं, लेकिन उनको उनसे पैसे निकालना और भी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का लीगल सिस्टम बहुत ही स्लो है। मैंने कहा सर क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि हमने खोला तो है इंडिया डेस्क, बहुत छोटा है, और तू यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहा है, LG फिलिप्स ये वो, तू ट्रेड कर रहा है ये वो, तू क्या करेगा वहां जाके? तेरा इट्स लाइक अ डिमोशन। मैं कहा कोई बात नहीं सर, मैं जाता हूँ, तो मुझे जाना है। क्योंकि मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन की कि यार कम से कम इस तरीके से मैं बैंक की जॉब भी रखूंगा और एटलीस्ट इंडिया में रहूंगा, एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ इवेंट्स, आई कैन बी पार्ट ऑफ लॉन्चेस, आई कैन बी पार्ट ऑफ सम लिट फेस्ट, maybe go on a shoot or I don't know some party, I don't want to be away. So I said चलो सर चलते हैं। Are you sure? Sure. Fine. उसने भेज दिया मुझे इंडिया पैकेज पे। अच्छा, मेरी वाइफ अनुषा इज ऑल्सो वर्किंग इन द बैंक एट दैट टाइम, शी वाज इन UBS, एंड देन UBS was opening an office in India. उन्होंने कहा कि वी हैव अ रोल फॉर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और हमें यहाँ से ही भेजना है क्योंकि वो हमें रिपोर्ट करेगा। हमें कोई नहीं मिल रहा जाने को, सब लोग हांगकांग छोड़ के नहीं जाना चाहते। मेरी वाइफ को कहा आप जाओगे? मैंने कहा प्लीज हाँ बोलो, और फिर मेरी वाइफ ने ले लिया। सो शी बिकेम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ UBS in India, and I came to India to the small distress desk which we had just set up in India, and I had to take some pay cuts, and the very biggest deals of Asia which I could have been eligible for, I would not. But मैंने कहा चलो कुछ कुछ तो कर सकता हूँ, right? I'll at least be in India. I can write and I can travel a little bit for my book work and I can do my job. तो फिर वो करते करते, like I kept writing Three Mistakes along with my transfer, and then I also remember I finished the book Three Mistakes, and then उसका launch हुआ इंडिया में, and I had moved to India by then, and the launch this time, like if you remember my long video, I think the previous one only, I guess 9, where I'm saying I was in Vasant Kunj Cafe Coffee Day with 5 people and begging them to turn their chair 45 degrees to see my book launch. The third book ka book launch was with the crew of Hello, because the movie crew said ये book launch अच्छी opportunity है मूवी को promote करने के लिए भी। तो मैंने कहा मूवी में जो एक्टर है यही launch कर दें। So that they said okay we'll do. So and at that time movie was almost ready, so they said we'll do the launch, we'll launch the book, and we'll also launch the trailer of Hello. I said okay fine, and then a launch was done at the Phoenix Mills in Mumbai, which as you know is a mill. We used to be a mill, now it's a mall, and उसका एक बड़ा सा quadrangle है. And that was the first launch I'd gone to of my own book, which was like a proper launch organized. And I went there with all the cast of Hello. It was Sharman Joshi, Gulpanag, Sohail, Amrita Arora,
A lot of people. Atul Agnihotri, the director, and Salman was in a special appearance, so he couldn't make it for that, and it was not, in a way, he was just a special appearance in the film. And then we launched the trailer of Hello There and my book, Three Mistakes of My Life, on a big LED screen. They were 2,000 people. That is the first time. And I'm sure some people were there because I had some movie stars with me, but there were people who had read 5.1. There were people who had read One at a Call Center. There were 30 news crews at least. There were so many cameras taking photos. That was my first brush with big, high profile media event of mine. This was in 2008, and 2004 is when my first book came out, where 5 people in a coffee shop had to be requested to turn. But in 2008 of I think October or September, I don't remember, when we uh, released the book Three Mistakes of My Life, it was a moment that just I could not believe it. I had there was a RJ, very famous RJ in Mumbai called Jeetu Raj. He had come. He never showed up for events. Everybody was like, his face was a mystery or whatever. He had come, and it was just crazy. I was like, I have never seen anything like this in my life, and this is happening. I think just the queue to buy the book, because it was not just for the movie launch, and the queue to buy the book was like at least 1 hour. Like I must have signed 500 books that day, you know, and nobody knew this. None of us knew, because this is not a social media time. We don't know how big you've become. And I was like, okay. And then I go home, and in the morning I go to office again, and I'm looking at a new distressed company. After this 30 cameras clicking my photos, and in the newspaper the next day, Mumbai Mirror or whatever, my photo is there. But I'm sitting in office looking at the files of a new company that has become bankrupt, called RPG Cables. आरपीजी, में भी यू हर्ड ऑफ आरपीजी ग्रुप, तो उनकी कंपनी थी, केबल्स बनाती थी वो, उसके दीवारा पिट रहा था. एंड दे हैड अ फैक्ट्री इन थाने. द फैक्ट्री लैंड वाज एक्चुअली मोर वैल्यूएबल नाउ, बिकॉज थाने में घर बनने लग गए थे, एंड द इलेक्ट्रिक केबल्स weren't making money. Anyway, I am there in office, and I'm doing this. Then then Hello released, and I kept going to office, and the film didn't do very well, right? But it wasn't a total like washout. It was not a flop. It was just like what they call a average to below average in terms of recovery film. So it covered costs. It was not unnoticed. It went noticed. Reviews weren't great, fine, but it came out. So it, like, everybody kind of knew ki kya ho raha hai. People did start saying, because the movie didn't do that well, some people did say कि books and all are fine, चेतन भगत बुक्स कर लेता है, बट ये जो बुक्स है ना इंग्लिश वाली, ये इसकी हिंदी पिक्चर नहीं बन सकती, you know. But all this was also being written कि maybe next time don't take Chetan Bhagat's books, ऐसे articles में लिखते थे. Of course, at that time another movie was being planned. It was called Three Idiots, also based on my book, but then that was later, right? I was still working on that project. I would sometimes meet Raju Hirani because I was in Bombay now, and he would ask me about IIT and education system. Sometimes I even introduced him to a professor at IIT. But then many times he would tell me that, listen, my previous film Lagero Munna Bhai has become a very big hit, and all the producers are saying make Munna Bhai 3, and your movie is like this again, three boys engineering college. I don't even know kiska kitna potential hai, because it's not a typical Bollywood story with one hero. It's very like I don't know, elite college story. So Munna Bhai 3 immediate buyers hai. Like, we'll make so much money if you make that movie. So he even made a trailer of Munna Bhai 3. अब जब ट्रेलर बनने लग गया पिक्चर का, तो ऐसे लगता है ना कि भाई फिर तो मेरी नहीं बनेगी थ्री इडियट्स. तो मैंने कहा ठीक है, ओके, नहीं बनेगी. You can see the trailer of Munna Bhai 3 is there, but the movie has never been made till now. Maybe they will one day, I don't know. And so anyway, Hello released, I told you, but I did get more and more coverage. People found out more and more about me. That launch, I was not the only person surprised to see the launch. The media was surprised too. The media had never seen in India an author who could get so many people for a book launch, that you need a
open ground like a 2000 people for a book launch in a mall. Like a bookshop would not, no bookshop in India can have more than 100 200 people. So people were like, people noticed me from there. And then the movie book Three Mistakes, that had become a big hit too. That book did very well at that time. People liked it. So I had three hit books: Five Points on One Night and Three Mistakes. I had one movie which is average-ish to not so good. So it's proper. Like a lot of people will call this a career, but then I'm in the office looking at the property contracts for RPG cables कि भाई हम फैक्ट्री बंद करके जमीन बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, और उस जमीन पे किसने केस किया हुआ है, किसी ने केस किया हुआ था, ये मेरी दिन से रात तक ये लाइफ चल रही है। और शाम में कई बार यू you नो know, कोई मूवी रिलीज हो रही है, कोई बुक रिलीज हो रही है, आई डोंट नो, यू नो। सो इंडिया का जो डेस्क था, इट वाज वेरी स्मॉल, very few deals we had, and bankruptcy is very hard in India. Now they made it a little simpler, but at that time it was very hard. But it's just I had a lot of work because very small desk. It was just two three people, you know. And जब ये सब हो रहा था, मैंने आपको पहले ही बोला मेरे मन में आ रहा था मुझे करियर राइटर बनना है. And when all this started happening, something happened in my brain. I did not want to do RPG cables anymore. Well, who could? Would you be able to do? One night you are partying with all the movie stars and 30 cameras are taking your picture, and next day you're like, हाँ भैया थाने फैक्ट्री के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स निकालो 50 साल पहले, एंड दिन से रात आप वो पढ़े जा रहे हो. Can you do this? It's difficult. Now that I think of it, how the hell was I doing it? But I was doing it, you know. कभी कभी मुझे मैसेज आ जाते थे मेरे फोन पे, एसएमएस होते थे तब, एसएमएस, यू नो, रिमेंबर दोस, जिस पे ओटीपी आता है अब. एंड आई कि आई वी रेड योर बुक, थैंक यू सो मच. समटाइम्स मेरे कोई इंटरव्यू होता था विद द मीडिया ऑन द फोन, तो मैं बैंक में आरपीजी केबल्स पढ़ के फिर बाहर जाके वो फोन कॉल आंसर करता था. आई ऑल्सो हैड my my boys were born, twin boys, 3 years old, you know. By now they were 3 years old, and my wife, I told you, was in a job, chief operating officer, which is quite a busy job too. And so we have twin boys at home. My wife is chief operating officer. I am a distressed debt executive director. That was my title in Deutsche Bank. Title में मत जाना, वो किसी को भी दे देते हैं. And I was a writer, and not just any writer, very popular writer at this time. So what this means is all good, but it was all crumbling. Like my family was like getting stressed. Not just me, my family was getting stressed. I had two jobs now: banking, writing, and a little bit Bollywood also. My wife had a job. We had two young kids. And I was just getting crushed. Now, in all this, ye socho ki I had to write another book. How can I write another book? I couldn't. So I had no time to write another book. I was miserable. I was horrible. I gained weight. Let me try and find a picture of around that time to show you how I used to look then. Because when you are messed up in the head, and when you're stressed, and when you're not following your heart or something, that's why I'm showing you this picture. This is what you become, right? This is, like I told you, this is 14 years back. This is me now today. You're seeing me. There is a difference. I'm sure you can see, right? Please comment if you can see a difference. And the difference is my mind. Because despite I was getting stressed because I could not decide, or I could not leave my job, but I really wanted to leave my job. But कैसे छोड़ सकते हो, बैंक की नौकरी कैसे छोड़ सकते हो, फॉरेन बैंक की नौकरी कैसे छोड़ सकते हो, इतने पैसे, I couldn't do it. And then I was miserable, you know, and that is going on and on and on in my head. And literally, we are talking 6 months, 1 year. It took me finally 2 years to of this phase when things happened. I was feeling good, you know, ki, on my achievements, but largely I was not happy because eventually the noise of Three Mistakes, Hello भी die down हो गया. Obviously, कितनी देर होगा एक हिट का, और उसके बाद it was just RPG cables. RPG cables, RPG cables, RPG cables. No time to write a new book. Past parties are over, past celebrations are over. Now RPG cables, RPG cables.
और एक बार मुझे याद है आरपीजी केबल्स के लिए मैंने एक मीटिंग हुई थी हमारी विद आरपीजी केबल की मैनेजमेंट एंड कपल ऑफ अदर लेंडर्स वगैरह, वो सब आए हमारे बैंक में, हम मीटिंग करते थे एंड हमें एक टर्म शीट साइन करनी थी, एक प्रपोजल हमने दिया था कंपनी को ठीक करने के लिए। बट द क्लाइंट सेड ये तो मैं साइन कर दूंगा सर, पर कैन यू साइन सम बुक्स फॉर माई चिल्ड्रन? That was the first time in my banking life my books had reached. The Indian clients of the bank were saying, okay, okay, we want to meet Chetan Bhagat and get the book signed. Now I should feel good. I should probably feel damn good कि मैंने ये किया, but I was not feeling good. You know what I was feeling? कितना चोमू है तू कि अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। इतनी तेरी रीच हो गई है कि ये मीटिंग में भी लोग आके बोल रहे हैं तेरे बारे में। तेरा जो ब्रांड है इतना बढ़ गया कि बैंक के अंदर भी अब लोग तेरे को एज अ ऑथर ज्यादा मानते हैं। और तू चमन लाल चोमू अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। वाई? बिकॉज दे आर पेइंग योर सैलरी। दैट इज अ चेन। they've caught you by the whichever body part, because they have a chain around you and that golden chain is keeping you here like a pet dog. I was like, what the WTF am I doing with my life? मैं क्या करूं? I wanted to quit, लेकिन मुझे कहा पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, मेरे इन लॉज क्या बोलेंगे? Because they were all like, okay, they enjoyed the movie releases and everything, but they were like, ठीक है जो मर्जी करो पर जॉब मत छोड़ना भैया, जो मर्जी करो, या हम नहीं, वी नेवर स्टॉप, जॉब मत छोड़, जॉब मत छोड़, इतने छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हो, जॉब छोड़ दोगे बिकॉज तुमने एक दो कहानियां लिख दी? So it was difficult, very difficult, right? I am telling you. And then there was this in my head, I would have these imaginary parties कि मैंने जॉब छोड़ दी और फट गई, बुक्स नहीं चल रही, पैसे नहीं आ रहे, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो बैचमेट से आगे बढ़ गए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैंक की, और ऐसे कंट्री मैनेजर बन गए, ये वो हो गया, और पार्टी में मैं गया और मैं फक्कड़ लाल वहां पे, और सारे मेरे फ्रेंड्स बड़े बड़े घरों में रह रहे होंगे, बॉम्बे के 4 BHK घरों में, और मेरा एक 2 BHK का घर होगा थोड़ा दूर। एंड दैट यूज्ड टू स्केयर मी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक आई डोंट नो, द ओनली पर्सन हु वाज सपोर्टिव इन ऑल दिस वाज माय मदर, आई मस्ट से, बिकॉज शी यूज्ड टू से, अच्छा चल छोड़ दे, कोई नहीं ट्यूशन कर लेना, like that's I think the Punjabi mother thing कि ट्यूशन तो कर ही लेगा. I think she was preemptive of the big ed tech industry that is coming. Maybe I could have done that. That is was an option. But rest all, and I love all these people in my life. But I can tell you, all were ऊपर से. हाँ ठीक है, छोड़ना है छोड़ दो, पर सोच लो. You know, support is something else. Support is not just ऊपर से. Support is a little deeper. And I didn't. I also had a few friends in Hong Kong. And it was very strange. All my Indian friends in the bank were like, पागल हो गया, छोड़ेगा कैसे, पकड़ के बैठा रहा है, बैंक की नौकरी बार बार नहीं लगती, तो पकड़ के बैठा रहा है, पकड़ के बैठे रहो। ये एक है ना हमारा देसी मेंटालिटी, मिडिल क्लास, पकड़ के बैठे रहो भैया, ऐसे अब सोचो मत, बस पकड़ के बैठे रहो। पर जो मेरे, because I was in Goldman Sachs earlier, I had some friends from there, even Deutsche Bank. Some people were not, some people from the America or Europe or like the Western countries people, they had some very good friends there also, and they started hearing about my books and they said, congrats. And I heard you moved to Mumbai. I said, yeah, with Deutsche Bank. And they were like, what, you still in your job? I remember a very good friend of mine, Jessica, and a very good friend of mine, Angela, who were there. They were working with me in Goldman Sachs earlier, and they're still friends till today, actually. They're just from the US. And they were like, what are you talking about, Chetan? That will never happen in America. That will never happen. What has happened to you, the way you have, grown, the way the way everything has happened for you, it will never happen in America, that people will just keep on working in the bank after you have a movie made out of your book already, and you are doing this. कर क्या रहे हो तुम, राइट? बेसिकली, और बट देसी लोग, वो पागल हो गया, पकड़ के बैठा रहा है, नौकरी है. सो आई वाज लाइक इन दिस, like the advisors were there, and they were all kinds of advice. I told you, family, whatever, right? So it was like
difficult because nobody could really tell me what to do. It had to be ultimately my decision, and that was there, right? मैंने बताने की कोशिश की अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को कि यार ऐसा नहीं है, मैं रुपी यहाँ पे एक्सचेंज रेट डॉलर, डॉलर सैलरी रुपी, दे डिडंट अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता, इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव लेफ्ट, एंड एट होम पीपल डिडंट अंडरस्टैंड मी, एंड जॉब कैसे छोड़ सकते हो, इंडियन फ्रेंड्स डिडंट अंडरस्टैंड मी, ऑफिस में आरपीजी केबल्स की फाइलें पड़ी हुई हैं, पढ़ते रहो बैठ के, और उस पर कंपनी ने केस किया होता, एक और बिल्डर ने, वो कंपनी भी ऐसी कमाल थी, वो पहले ही वो जमीन फैक्ट्री की किसी को बेच के आ गए थे, अब कह रहे थे हमें, कहते हैं हम बेच देंगे, हमने कहा, फिर हमने कहा ये कौन है, हाँ इनको भी हमने थोड़े एक एमओयू साइन कर लिया था, तो सब लड़ रहे हैं उस जमीन के लिए भी, हेडेक, एनीवे आई वाज टोटली आइसोलेटेड, मेरा मन ही नहीं कर रहा था किसी से बात करने का, I couldn't talk to anyone, so I became isolated. I gained weight, I told you, I showed you the picture. I became quiet. I'm normally a very funny, fun loving, laughing guy. All my laughter was gone. I never used to laugh. I'm always doing chatter putter. अब देख ही रहे हो, anybody who can have the guts to make long videos of 1 hour each and has made 10 of these, कितनी chatter putter वो इंसान कर सकता है, but gone. I would not talk, just be, I was be in the bank, and I would look for a way to go out for a break, literally to breathe out of the bank. तो वो फोर्ट एरिया में हमारा ऑफिस था, डॉइचे बैंक का, कोडैक हाउस एक हेरिटेज बिल्डिंग में, बाहर लोग जाते थे चाय पीने और टोस्ट खाने, जब भी कोई भी जा रहा था तो मैं उसके साथ चल पड़ता था, तो दैट्स आल्सो व्हाई आई वाज गेनिंग वेट, कि तो टोस्ट खाने जा रहा है मैं भी चलता हूँ, चाय पीने जा रहा है मैं भी चलता हूँ, तो मैं अपना हर चीज में, पान खाने जाता था 2 बार मैं दिन में, क्यों, बस टाइम पास, राइट, एंड आई गेन वेट, एंड आई वाज मिजरेबल इनसाइड, मिजरेबल आउटसाइड, एंड मेरे को याद है अब तक, एक दिन ऐसा आया कि एक दिन मुझे कहा मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं कहा क्या क्या करने जा रहा है, कहता मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, नो आई डोंट स्मोक, आई नेवर हैव स्मोक, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन, बट मेरा बाहर जाने का इतना मन था उस ब्रेक के लिए, मैंने कहा चल मैं भी पी लेता हूँ, एंड दैट वाज लाइक अ लो पॉइंट, आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, तेरी लाइफ में अच्छी चीजें हुई हैं और तू अपनी सेहत खराब कर रहा है, तू सिगरेट पीनी शुरू कर रहा है एट दिस एज, जब तेरे को पता है कि ये खराब चीज है, अब I'm really not thinking right, like I said my mind was not okay, I'm not thinking right, तो इतनी मेरे में अवेयरनेस आ गई कि आई एम नॉट थिंकिंग राइट, राइट, तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, सो दैट टाइम आई गूगल्ड साइकेट्रिस्ट्स नियर मी, मेरे को याद है फोर्ट में मेरा ऑफिस था, तो मैंने कहा फोर्ट में ही करता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ घर पे, मैं फोर्ट में ही करता हूँ, सो मैंने साइकेट्रिस्ट ढूंढे, एंड आई फाउंड वन साइकेट्रिस्ट व्हिच वाज जस्ट कपल ऑफ बिल्डिंग्स अवे, and I booked an appointment and I went there, and it was like a really old fort की आप building देखो ना, unless they are well maintained, जैसे Deutsche Bank used to maintain the building, but if it is not maintained ना भैया, जैसे आप हॉरर मूवी शूट कर सकते हो उन बिल्डिंग्स में, मतलब इट्स लाइक दैट, तो एक ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ करती सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं गया, और वहाँ एक, शायद जितनी ओल्ड बिल्डिंग थी उतने ओल्ड वो अंकल थे जो साइकेट्रिस्ट थे, लाइक ही वाज ओल्ड 75-80 years old and he was sitting there, और मैं एक मोटा गंदा दुखी आत्मा वहां जाके बैठ गया, दुनिया की नजरों में एक बहुत हिट नॉवलिस्ट, और व्हाटएवर, और मैंने कहा सर मेरी फट गई है बेसिकली, मतलब आई वाज ऑलमोस्ट अशेम्ड टू गो देयर, एंड ही वाज अ नाइस गाय, ही वाज रियली नाइस, ही सर देखो सर मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, आपकी जो हालत है मुझे लग रहा है यू हैव अ माइल्ड डिप्रेशन, तो मैं आपको दवाइयाँ दे सकता हूँ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट दवाई देता है, मैं कहा नहीं दवाई नहीं लेनी, क्योंकि इतनी मेरे में अक्ल थी, आई सेड सर देखो ये दवाइयाँ माइंड पे काम करती है ना, और मेरे माइंड से स्टोरीज आ रही हैं, और जो मेरा माइंड स्टोरी बना रहा है इंडिया में लोगों को बड़ी पसंद है, अगर इस दवाई में कुछ केमिकल हुआ जिसने मेरी स्टोरी गवा दी, तो मेरी पूरी फट जाएगी, तो मैं दवाई नहीं ले सकता, और कोई तरीका तो बताओ। देन ही सेड कि देखो एक हमारे फील्ड में एक साइकेट्रिस्ट होता है और एक साइकोथेरेपी होता है, which may be useful for you guys also to know in case you ever need something like this in life. तो ही सेड साइकोथेरेपी इज वो लोग जो बात करते हैं, सिर्फ वो दवाई नहीं देते, वो बात करेंगे, एंड क्योंकि आप लग रहा है कि आप काफी कम्युनिकेट कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया चटर पटर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो आप एक थेरेपी का सेशंस ट्राई करो,
शायद उससे आपको फायदा होगा। जो लोग नहीं बोल पाते उनको नहीं इतना होता, पर आप तो बोल पाते हो, तो जाके जाओ और बोलो आपको क्या हो रहा है, वो ठीक होगा। और मैंने कहा सर ठीक है। मैं वैसे कैसे बोलूंगी सर, आप ओल्ड हो, ऐसा तो नहीं बोल सकता। मैं कहा सर कोई ऐसा दे सकते हो जो मेरे को समझ सके, जो मेरी जनरेशन मतलब। सर अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक यंग थेरेपिस्ट का नाम देता हूँ, उसका नाम है मिस आशिका, एंड शी इज इन मरीन लाइन्स, यू गो मीट हर। आई स्टिल नो आशिका until today. I may even get her on my YouTube one day, because she is very smart and very intelligent. And if you remember the book Two States or the movie Two States, the opening of the book and opening of the movie में हीरो एक साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में बैठा होता है और वहां से वो स्टोरी शुरू करता है. This is exactly the stage of my life, and this is exactly was inspired by this therapist Ashika. In fact, the book I wrote after 3 mistakes of my life was Two States, but that's how I went to see her. Um, um, and I saw she was in office in Marine Lines. I met her. I saw she had kind of heard of me, thoda on my books and all, and she saw me, and I was in a bad shape. I'd become probably worse, and she could see it. And I won't go into full details, but I basically told her so many family expectations. I can't decide. Basically, I can't decide what to do, what to leave or not leave. And then she said one thing, ki you are not leaving because you want to keep your family members happy, right? You are doing it for that. But she said, you cannot keep everyone happy unless you are happy. आप दुनिया में लोगों को खुश नहीं रख सकते until आप खुद खुश हो. दोबारा बोलता हूं मैं, आप दुनिया में लोगों को खुश नहीं रख सकते जब तक आप खुद खुश हो. इट इज लाइक दैट ऑक्सीजन मास्क इन द प्लेन. जो अनाउंसमेंट होती है, बच्चों को या औरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद पहले ऑक्सीजन मास्क लगाओ. एंड इफ यू want to quit, then just quit. If that will make you happy, then you do that, and then you think about other people. And then I said, you know what, screw it, she's right. मैं खुद ही खुश नहीं हूं, मैं किसी और को क्या खुश कर सकता हूं. एंड आई विल क्विट. दिख जाएगी. और मैं कहा अगली बुक मैं तभी लिखूंगा जब मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इतने बिजी होकर बुक भी लिखूंगा तो अच्छी बुक नहीं आएगी. और एक मैंने कंडीशन डाल दी कि अगली बुक लिखनी है, छोड़ो पहले जॉब. खुद को ही बोल दिया. तो मैंने कहा कि मैं प्लान करता हूँ कि मैं छोड़ूंगा. And you get the year end bonus in a bank. So normally people leave after collecting the bonus. Obviously तुम 10 महीने काम किया, अब 2 महीने और के बाद तुम्हें बोनस मिलने वाला, तो लेके ही जाओगे ना. तो बोनस के बाद अच्छा, for quitting obviously my India desk was very small, so I had to go to Hong Kong back to my boss to quit. So I went to Hong Kong after the bonus day. I went. और कमाल की बात यह है कि मैं अपने बॉस के पास क्विट करने गया, बॉस ने कहा मैं भी छोड़ रहा हूँ. और मैंने बॉस के बॉस से पूछा, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, फिर मैं आपको दे देता हूँ रेजिग्नेशन. कहते नहीं नहीं मैं भी छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा सर हो क्या सबको राइटर बनना है. उसने कहा नहीं 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 नहीं, हम अपनी कंपनी खोल रहे हैं, हमने पार्टनर ढूंढ लिया है, हमने कुछ कैपिटल रेज कर लिया है, हम अपना डिस्ट्रेस डेस्क खोलेंगे, एकदम बुटीक डिस्ट्रेस डेट फर्म, और तू भी आ जा. एंड आई वाज लाइक क्या बोल रहे हो सर, मैं तो छोड़ने आया हूँ और आप मेरे को एक और जॉब ऑफर दे रहे हो. कहते हैं हाँ आ जाना. मैंने कहा सर, तो मैंने उन्हें ईमेल कर दिया अपना था अपना रेजिग्नेशन, पर उन्होंने मुझे बुला के बोल दिया कि तू हमारे साथ आ जा, आ जा, तेरे को इक्विटी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे. ओके, ये होगी बात. फिर क्योंकि ये लोग छोड़ रहे थे, बाकी जो डॉइचे बैंक के लोग बचे थे वो मेरे पास आए. मैं कहा सर मैं छोड़ रहा हूँ. कहते सुनो सुनो सुनो, ये लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब यहाँ पे सीटें खाली हो गई हैं सीनियर, तू बॉम्बे का इंडिया डेस्क छोड़ वापस आ जा, जो तेरी हांगकांग में पहले जॉब थी उससे मच बेटर रोल पे तेरे को लेते हैं, तू आ जा, तेरे को मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे. मैंने कहा मत करो यार ये मेरे साथ, प्लीज मत करो. मैं सोच के आया था कि मैंने जॉब छोड़नी है, मेरे को नहीं, और तुम इस जॉब में और चीजें मुझे दे रहे हो. मेरे को लग रहा था मैं इस जॉब के पर्क्स कैसे छोड़ूंगा, और तुम मुझे और पर्क्स दे रहे हो, और सीनियरिटी दे रहे हो, और पैसे दे रहे हो, वापस बुला रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं करना है. सो एक जाते जाते भी उन्होंने और मुश्किल मेरे लिए कर दिया. मैं कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं करनी. सोच ले, मेरे बॉस ने जो अपनी कंपनी खोला था उसने कहा सोच ले, जो एग्जिस्टिंग लोग थे डॉइचे बैंक में रह गए, उनकी बेचारों की हालत खराब हो रही थी, इतने लोग छोड़ के मेरे बॉस के साथ जा रहे थे, कि तू इधर आ जा,
तेरे को सीनियर बना देंगे, हेड बना देंगे इस कंट्री का, ये कर देंगे वो। और मेरी फट गई कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं किया, मैं वापस आ गया। मेरे को याद है मैं जब हांगकांग गया था, तो obviously I it was a business trip because I had gone to my office. So I was staying in this Marriott hotel in Hong Kong, JW Marriott in Hong Kong near my office. Very nice hotel, and paid for by the bank, of course. I remember telling myself, this is the last time I'll be staying in such a nice corporate kind of hotel because I may not be able to afford it. अब तो मैं झोले वाला राइटर बन जाऊंगा, राइट? अब तो मैं झोले वाला राइटर बन जाऊंगा, तो फिर उसके बाद मैं कैसे मतलब रहूंगा? तो चल बेटा एंजॉय कर ले। मैं गया ऑफिस से, शाम को जाके मैंने अच्छे से डिनर विनर खाया, और रात को मेरी फ्लाइट थी, और रात को मैंने फ्लाइट ली। फ्लाइट में भी मुझे लगा कि लास्ट मेरी बिजनेस फ्लाइट है, एंड इसके बाद तो नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। मैं छोड़ के वापस आ गया। मेरे को ऑब्वियसली इंडिया आना था एक दिन के लिए, ऑफिस जाके एक दिन तो लगेगा ही, लेकिन मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। फिर से उनका फ़ोन आया, सोच ले सोच ले सोच ले। बट देन मैंने कहा यार वो बंदा मैं फिर नहीं बनना चाहता। द गाय हु वाज डेस्परेट, फैट, सैड, गोइंग आउट टू हैव सिगरेट्स, वो नहीं बनना। तो मैंने कहा नहीं सर, अब नहीं हो सकता। जो भी पैसे हो, जो भी टाइटल हो, जो भी रोल हो, 4 BHK में रहो या 2 BHK में रहो। 4 BHK 2000 स्क्वायर फीट का होता है, 2 BHK 1200 स्क्वायर फीट का होता है। 800 स्क्वायर फीट की बात है सर। मेरे दोस्त 2000 में रहेंगे, मैं 1200 में रहूंगा शायद, अगर मेरा काम नहीं चला तो, राइट? तो मतलब 800 स्क्वायर फीट की बात है। 800 स्क्वायर फीट के पीछे मैं अपने सपनों का गला नहीं घोटने वाला सर। मेरे सपनों की कीमत 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। दे लाइक सीरियस? आई सेड यस, आई एम वेरी सीरियस। मैंने कहा सर मेरे को एक गुड बाय मेल भेजनी है सबको, क्योंकि मैं इतने लोगों को इतने साल से जानता हूँ, आपको तो मैं बता के जा रहा हूँ, तो मैं आपको गुड बॉय मेल भेज के मैं यहाँ से निकलूंगा। तो मैंने ये वाली मेल भेजी, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और एटलीस्ट आई रीड इट नाउ, राइट? सो दिस द मेल, मंडे March 30th। ये मैंने अपने बहुत सारे लोगों को, जितने लोगों को मैं डॉइचे बैंक में जानता था, जितने मेरे फ्रेंड्स थे, सबको भेज दिया था। एंड आई रीड इट verbatim. Dear all, after 12 years in the finance industry and 4 great years at Deutsche Bank, I have decided to leave the bank. I will mainly be focused on writing, both films and books. I will also be spending significant time on youth based issues and inspiring the younger generation to achieve their potential, especially in smaller cities of India. It has been quite an eventful life so far, and I'm excited and nervous at the same time as I enter the next phase. Leaving a secure job for the uncertain isn't an easy decision, especially when you come from a middle class background and it is a job that a million people would want. My country has given me too much, and most of my dreams are already fulfilled. From now, it is less about me and more about the people who have made me, my readers. So while I do acknowledge that a million people want this job, something tells me that a billion people would rather I leave it. My new contacts are below. Love, Chetan Bhagat. And just like that, I was free. I left the bank. I sent the mail. I walked out of the bank. I did not turn around. And that's it. That was the thing. पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे वो सोनू टीटू की ट्वीटी में, सोनू टीटू की स्वीटी पिक्चर में कहता है ना, पीछे मुड़ता तो मेरा टशन नहीं चला जाता, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने बोला था अपने आप को पीछे मुड़ के नहीं देखना, और फिर मैं घर चला गया, और घर जाके मैंने बोला डन, आई एम नो लॉन्गर अ बैंकर। अगले दिन नो ऑफिस, नो नथिंग, नो कोलीग्स, नो शेड्यूल, नो आरपीजी cables because I'd cut all cables. So now what? सुबह हो गई, कुछ करने को नहीं है, बैठ गए हैं, छोड़ कर के आ गए हैं। अब क्या करूं लाइफ में? अपनी लाइफ अब कैसे बनाऊं? राइट? आई वाज जस्ट लाइक 34 35 years old. So what do I do with my life for the rest of my life? All that, guys, you got it, will be in the next video.
So do comment, like and share this video if you like it. Tell me what you thought of it. मुझे जरूर बताओ, मैं सारे comment पढ़ता जरूर हूँ, and I try to heart as many as I can. And obviously if you want such videos और लोग देखें, तो आप अगर आप उस पर कॉमेंट करोगे, लाइक करोगे, ये सब करोगे, तो यूट्यूब औरों को भी दिखाता है, as you know this very well. Thank you so much. Love you all for supporting me, supporting this channel, seeing the 10th long video. And yeah, whatever I've done in life has been possible because of you guys. So thank you so much. Believe in yourself. Take care.